Hello. Okay, thank you. So I want to know whether I have to give the session English or mix Hindi and English. Are you able to both? Okay. So how many wants both the session, English and Hindi? Okay, English. Okay. Yeah, good. Uh, I'll start my session now. My name is Michael Carvalho. मेरा नाम Michael Carvalho है, and I'm Microsoft specialist. Today's session will be Power BI. Okay. So आज का सेशन पावर बीआई पे रहेगा और आई विल बी गिविंग यू हाउ टू स्टार्ट पावर बीआई एंड कैसा दिखता है वो एंड व्हाट यू कैन डू इन पावर बीआई इज अ वॉक थ्रू पावर बीआई में मैं आपको आज एक्सप्लेन करेगा ओके आई स्टार्ट नाउ सो मैं आप प्रेजेंट करेगा पावर पॉइंट just to explain you some of the benefits of Power BI. Hope you can see my screen. It's clear? Okay. So today's session is Power BI. Okay. So वाई पावर बीआई क्या है और क्यों पावर बीआई बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंसी हमको क्यों पावर बीआई चाहिए we can use excel also but why is power bi it is a business intelligence platform that allows business to clean and completely transform data into meaningful data इसका मतलब क्या है एक बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा है प्लेटफॉर्म है जो आपके साथ डेटा है फॉर एग्जांपल एक्सेल में डेटा है और किस में टेबल में डेटा है यू वांट टू ट्रांसफॉर्म मीनिंगफुल डेटा मतलब यू वांट टू पुट इन ग्राफ और चार्ट और एनीथिंग यू वांट टू प्रेजेंट करने का आपको बॉस को प्रेजेंट करने का मैनेजर को प्रेजेंट करने का यू कैन नॉट डू इन एक्सेल में क्या होता है 1,000 2 लाख 3 लाख डेटा रहता है टेबल्स और रोज उसमें आप प्रेजेंट नहीं कर सकते सो बेस्ट थिंग यू कैन यूज पावर बीआई हाउ टू प्रेजेंट और हमको सिर्फ पावर बीआई क्यों चाहिए अभी उसका मतलब में बहुत है लाइक फॉर एग्जांपल टेबलो इज देयर देन सेल्स फोर्स इज देयर सेस इज देयर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर है पावर बीआई क्यों अगर हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है एंड इफ यू वांट टू गो who is a leader in business intelligence now currently Microsoft is the topmost if you see next to Tableau Microsoft is topmost who leading the business intelligence platform okay like data analysis, which is a software, is a Power BI. Now, what is Power BI? Power BI का मतलब क्या है? Power BI allows you to view, analyze, and visualize huge quantities of data that cannot be open in Excel. पावर बीआई के पहले एक्सेल था हम एक्सेल में यूज करते थे एक ग्राफ बनाते थे एक टेबल में एक शीट में दूसरा पाई चार्ट बनाते थे वी हैव टू डू इट बट वो सेपरेट सेपरेट रहता है इफ सब we want to bring everything under one screen for that we have to use power bi okay which we can view analyze and visualize huge data मतलब बड़ा data to convert data from different source to build interactive dashboard and business intelligence reports अगर मैंने नीचे एग्जांपल दिया मेरे पास एक एक्सेल डेटा है उसमें इतना बहुत डेटा है बट ए मैं आपको दूसरे को प्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसको दिखाने का एक कॉलम में ईच रो में क्या है से ये सब डेटा में पावर बीआई में इंपोर्ट करके आई कैन जनरेट सम ग्राफिक डिजाइन लाइक फॉर एग्जांपल पाई चार्ट है ग्राफ है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मैं आज आपको विजुअलाइजेशन क्या होता है ये अलग पाई चार्ट क्या है ग्राफ क्या है ये सब सिखाएगा ओके पावर बीआई आपको अभी ये सॉफ्टवेयर चाहिए पावर बीआई यू नो एक्सेल वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पैकेज में आता है ऑल कम्स अंडर वन पैकेज now if you want to get power bi it's come free software so what I'll do I'll send you the link I'll attach this link in your
इन योर चैट में, आप भी डाउनलोड कर सकते हो वो। 1 minute, I'll share this. I'll share the link in your this one. Just give 1 minute. मैंने चैट में लिंक भेजा, पावर बीआई का लिंक। ओके। See, when you click on link, it will take you this page. ये पेज को आपको लेके जाएगा। ये पेज है पावर बीआई लिंक। देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डैशबोर्ड। आपको इधर क्लिक करने का है, एंड देन इट टेक यू टू अदर लिंक। ओके। सो दिस अ फ्री सॉफ्टवेयर, इट्स कॉल्ड पावर बीआई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। ये डेस्कटॉप में इंस्टॉल करने का। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड। व्हेन डाउनलोड हियर, now after clicking on download you get two options. एक है Power BI desktop setup, and second one Power BI desktop setup 64exe. Now ये दो डिफरेंट, ये सेम है बट टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर। आपको पहले जानने का आपके सिस्टम में कौन सा वाला है, x64 और विदाउट x64। उसका मतलब है we have two types of system. One is 32-bit system and one is 64-bit systems. Now if you want to know what what kind of system you have, so you have to click on, you have to search for my PC. Okay, when you search for my PC, you have to right click on that and click on properties. In the properties, it will show you system type 64-bit operating systems, that is x64 base processor. Okay, it's clear? Yeah, you able to do? Can I show, you want to show me again, फिर से दिखाने का, और it's okay, it's clear? Don't search in Google. मैंने आपको लिंक दिया है इधर. If you see my screen, I give you one link called Power BI Microsoft.com. You have to click on that link. Chat में मैंने एक लिंक भेजा है, वो क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद, now I'm clicking on that. It will open a screen. Okay, it's called Download Power BI Tools and Apps. आप स्क्रॉल करो, उधर आपको Microsoft Power BI डेस्कटॉप मिलेगा। It's clear? Just try. Okay, then you have to click on Advanced Download option. Okay, then go to select the language below and click on download Power BI desktop download. Okay, then you have to go PBI desktop setup x64 64-bit. How to know whether system 64 32-bit? आपको इधर my PC टाइप करने का है। Here also you can right click on my PC and property, or everybody we won't have my PC, you can go to control
पैनल, कंट्रोल पैनल में यू हैव टू क्लिक ऑन सिस्टम. ओके, उधर आपको मिलेगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको पहले वाला क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला 32 बिट. But now all the systems come in 64 bit. So you have to select 64 and download it. It's clear? After downloading, you'll see on a desktop called Power BI desktop. If you have to double click on it, it will show you. It will open this screen, Power BI. Okay. Now today what I'll be teaching you, I'll be teaching you second stop. Now I taught you how to download it. So today's session, I'll show you to transform, overview and dashboard. Transform your data into meaningful data by importing the data to the Power BI. This is a transform. Overview means मैं आपको Power BI का क्या रहता है, उसमें क्या स्क्रीन है, विजुअलाइजेशन क्या है, what is the option, that I'll teach you. बाद में हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे, एक सेल्स डैशबोर्ड बनाएंगे. उसमें आपको डेटा पुल करके कैसा प्रेजेंट करने का वो मैं आज सिखाएगा. सो ट्रांसफॉर्म, ओवरव्यू एंड डैशबोर्ड. ओके, so after open you'll get this screen. This is a home page of Power BI. Okay, in Power BI you have like how we have Word, Excel. इधर भी आपको minute. Here also you'll get a menu, home menu, all this menu, and also tools menu, which is a get data, Excel workbook. Okay, all these are options. And aside you'll get visualization of data. So what we'll do, first step, we'll transform some data into Power BI. Now how to do it? We can do in two steps. Two option. One is you can say import data from Excel. So और एक बात है, we can import data in different types of platform from different types. One is from Excel, one is from SQL Server, one is from other blank data, and other is from other data sets, other databases. But today, to make it simple, everybody knows Excel. So today I'll explain you how to import data from the Excel. So I can click on import data from Excel, or I can click on get data Excel workbook. Okay. So today I've create one database data called data. The file name is data, in which all the tables I have info. Okay. Now I'm importing data. So inside the data there is called one worksheet. So I'll show you the Excel sheet. 1 minute. Okay, this is the Excel sheet. Yeah, and this is the data. The difference of data. One is called written data, Excel data. So I'll show you that. Yeah. So this is Excel sheet. So what we'll doing today, we'll transform the data. We'll import data from the Excel sheet. Now, what is the Excel sheet contains? This is the data of Coca-Cola company. There are different types of product. Coca-Cola का Fanta product है, Dasni water है, Powerade है, Diet Coke है. These are products, brands. We have a retained ID, is ID number, date, month, region, state, और पूरा साउथ अमेरिका का है. उसका पर यूनिट प्राइस, यूनिट सोल्ड, मंथ एंड रेवेन्यू, ये डेटाबेस है. ओके, सो व्हाट आई एडिट टू कॉलम्स. इसमें मंथ यूज किया क्योंकि टू अंडरस्टैंड इन ग्राफ वी नीड name of the month. We cannot use 1 2 3 4. That's why I use one formula called
text B to month, convert number into month. और next is revenue. Revenue मतलब क्या है? Unit price into sold, which give you revenue of a particular month of particular brand data. ये मैंने दिया. So अभी क्या मैंने किया, वो ये सब डेटा इस पे इंपोर्ट किया. Okay, after importing you will get two options. One is load, transform data. So what we'll do, we'll click on load data. Now data is getting load now. Okay, okay, screen not visible. Yeah, okay, now it's visible. Okay, sorry. So I'll teach you again. Okay, so what I did, मैंने Excel में एक data लिखा. Okay, this is a data from Excel. ये data है Coca-Cola का. They have different brands in Coca-Cola. Sprite, Fanta, then Diet Coke. All these are different brand. So this is a data from America states, different states. Retail ID, date, month in numbers, region, state, unit price, sold. So here I put two more columns called month name and revenue. Month name matlab tax, I've converted month number into names, because when you take the data in the graph, we need the name of the month. We cannot put 1 2 3 4 month. We can convert it. So this is a formula I use. Tax B2 means month, month, date, and then and the month, and the revenue to a second column, which is a multiply of unit into sold of the particular state, particular brand. Okay. So now we'll go to Power BI. Okay. So how to import data in Power BI? You have to click on get data and import Excel. Okay. So I'll click on Excel and then I'll select the data set and click on open. Okay. You can see here, उसमें एक ही sheet है. So it will select the sheet and I'll click on load data. Okay. Now, if you see on left hand side, there are three options. One is called report view, which is this one. Table view. अगर आपको टेबल देखने का क्या क्या है, you can click on this table view. Okay, and this is table view. It show whatever the Excel table, same table view, it will show here. Okay, and next one is model view, which won't be we won't be using it, but it'll show you the model view. So I'll delete the delete it. Okay, no problem. Yeah. So this is a sheet one. We'll use a sheet one only. So there are view, report view, table view. Okay, we'll use only one table, sheet one table. Yeah. Okay, sheet one table. Now what we can do with this? So if you see here, we have menu and we have visualization. So same data, I want to overview this. I'll show you the overview today. Now second option is overview about Power BI. Now, same data I want to present in graphical way, maybe graph using pie graph or cards. I'll explain you all these things. Now, if you see the visualization category, जो आपको एक्सेल में दिखता है सभी इधर ही दिखेगा. इधर है chart is there, pie graph is there. So different types are there. Tables are there. All different types are there. Today, what we'll do, we'll create one dashboard of sales dashboards of Coca-Cola, and how to use it, I'll explain you.
Okay, so this is a building a data. Now visualization call this one tools are there, and data tools. Data tools में क्या है? If you see, there are different types of columns: beverage, brand, date, month name, प्राइस पर यूनिट. जो एक्सेल में है सभी इधर दिखेगा. ओके, सो व्हाट आई डू नाउ, आई यूज कॉल्ड कार्ड मतलब क्या है? आई वांट टू शो द फिगर, टोटल सेल क्या है, टोटल काउंट क्या है, सो दैट आई कैन यूज कार्ड. ओके, I click on that and it will display the card. So now I want to know what is the total revenue. So card मुझे वो display करने का one figure total revenue. So what I'll do, I'll click here and I'll click a revenue. So if you see here, इधर मुझे अभी कितना रेवेन्यू हुआ, टोटल रेवेन्यू वो दिखेगा. इट इज 8.22 मिलियन. एक ये अभी why showing million? Because we are viewing the South of American data, which is in dollars, and they explain they're not showing crore, they're showing millions, not in crores. So next class I'll show you how to convert millions in crores in Indian rupees. But today we'll check in dollars. Okay, 8.22 million. So if you see here, I selected revenue. If I select price per unit, it will show you that total number of sum of price of unit. So today I'll explain you revenue. Okay. So we'll make three different types of cards. One is revenue, one is total units sold. So for that I need one more card. Okay. So I'll click here. So what I can do, I can right click on that and I can copy it. Okay. Copy. ये copy करके उसका और एक बना सकता हूँ मैं, दूसरा वाला. और I can click on that and one more I'll do. So थोड़ा I'll make it small. मैं छोटा करता हूँ अभी. So I click on one more card. I click here. Okay. So first one, I say sum of revenue. Second one, I'll say price per unit. Okay. Unit sold. Or price per unit. Okay. Average price per unit. Now, whenever I select that, if you see here, और कुछ column आ रहा है. If I click on this, it'll show you more column. Sum of revenue. Then if I drop down, it'll give more options. Sum, count, count list. It will show you different options. Now if I want to change the color, so how to change the color? I have to go to format for visual. Here is called color, call out value. Call out value is 8.20 m. So here if I want to change it in blue, so I can select the blue. Okay, and then if I want to remove the decimal point, अकल decimal point निकालने का तो उसको zero बनाने का. So I'll make it 0. It will decimal point. Now, if I want to put what kind of presentation is there? So what we'll do, we'll put one header for this. Okay. So this is cards. So if I want to put header, इसको header दे देने का. So I'll go to view. Okay. I'll click on shape और इधर rectangle है. So I'll click on rectangle. Then उसको मैं एक header बनेगा. Header क्या है? Sales dashboard. Okay. So this is my this. Now I want to put title for that.
Okay, so I'll put sales just 1 minute. I'll हेलो। Yes. हाँ माइकल जी, आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। Yeah, yeah. I'm just doing some one thing. या ओके। एक एरर है. Okay, sorry for that. Yeah. See, this is a cards. Okay, there are three cards. One is called sum of revenue. Then we have sum of units sold, and we can use a count. So जो select करते हैं, if I want to give a color for that, I have to click on this. There are two options. One is build visual, and next is format visual. Format visual में call out value रहता है. There you can give the color. Okay, so this is the color, and then
If I want decimal, I can increase the decimal point. If I don't want, I'll make it zero. Okay, so zero करते हैं. Same way, I can change the color for this also. Okay, yeah. So if I want to give color, fill this with color, that also I can do. Filling with the different colors. Okay, so this is the option. I can put effects on that. Background color क्या रहता है अगर different color देने का है. This I want to give this color and this I want to give general में जाके you can change the background color. Okay, this color. Yeah, the different color. Now what we'll do, we'll create one graph. So for graph, I have to go to, there are different types of graph. One is a stack bar graph, then different type column graph. So we'll use stack column chart. Okay, so I click on that, it'll generate a column chart. अभी चार्ट में क्या होता है, there are two types of pyramid. One is x axis, y axis. I think all of you must be knowing that axis, y axis. So what I'll do, I'll select total revenue and the month name. उस month में कितना revenue हुआ, that I want to select it. Okay, now if you see here, it's showing you two options in chart. Okay, it's showing month name and the revenue, कितना revenue हुआ. So but it's showing December, July, August अलग दिख रहा है. We have to make it in order. It's not showing January, February order में क्या है. So for that you have to go to Excel sheet. इसमें Excel sheet में गया. See, if you see here, although it is January, February, but it's not sorting as the per the order. So I have to select it and then I have to sort in the order of the month date. So what you have to do, you have to select filter and then okay, then sort by month. Okay, and then save it and you have to refresh it. Okay, I'll show you then. So okay, then go here.
Okay, I'll tell you next time after finishing class how to do that. So we have different types of option. One is one is cards which show you figure what figure it is. Then we have a graph. We can put one more. Now if we want to know अगर हमको जानने का है different region क्या रहता है. अगर we want to know South Africa में different region, so there is one more called fill map. So if I click on that map, so it will show you the map of America and different states. Okay, so I'll check the map and I'll select the regions. Okay, state. अभी now if you see here, इधर आपको वो state में कितना बड़ा revenue, if it is dot c, if you can say a revenue 34,800 है California. If you see here the different revenue, this is 26,878. Okay, so what I can do, I can use zoom also to map setting, और वो zoom भी कर सकते हैं control डाल के. I can use zoom button also if I want to zoom that. So if I zoom that, see you can see here different state में कितना revenue है. So if you click, it will show you the revenue of the particular states. So if you say California is the highest revenue of this. Now I made a chart, cards, graphic card, and then link. So there is one more interesting option which is called slicer. Now here I am not able to make what's the revenue of particular brand. Now I want to know the brand Coca-Cola or Sprite, कौन सा brand कितना revenue है. I want to know each and everything. So I have to click on slicer. Okay. So what you do, you have to click on slicer and then click on this. Okay. So I'll click on brand. So if you see eight a column में आ रहा है vertical column. So I want to make it horizontal column. I'll go back to here and click on slicer setting. So all these settings come under visualize. Okay, there are two options called format your visualization. If I want to put in different type, I can put in title way. So if you say it's called title, vertical or drop down, so I'll click vertical options. Okay, title options. So if I zoom it, it will give me in one column. Column में दिखाएगा वो. Now what I can do using this? So if you see here, मुझे अभी कोको कोला में ग्राफ चाहिए और कितना ब्रांड कितना रेवेन्यू हो गया, हाउ मेनी यूनिट सोल्ड, मुझे कोको कोला चाहिए. सो व्हाट आई डू, आई सेलेक्ट कोको कोला. ओके, सो इट विल गिव मी फिगर ऑफ कोको कोला रेवेन्यू, सम ऑफ रेवेन्यू कोको कोला इतना हुआ. इफ आई वांट टू नो द ब्रांड ऑफ डाइट कोक, आई क्लिक ऑन डाइट कोक. So this is a PowerPoint where I can use different types of visualization to make a meaningful data. अगर डाइट क्लॉक किया तो डाइट क्लॉक आएगा. If I want to make it Fanta, if I click, it will give Fanta. If you see the graph also changing, now I want to know the December is highest of Fanta. अगर मुझे दिसंबर में इतना बड़ा सेल क्यों हुआ, so I want to know. So with this there is AI technology also integrated. I have to right click on it and then I have to click on analysis, find where the distribution is different. So if I click on that, with the AI technology, I can make out the ranking result. क्यों distribution ज़्यादा है वो state में on that particular month, December में. So it will show me the complete details. Like December में इतना क्यों है. Okay, because this Midwest with 25% of record, 21% record, ये सब है देख. Okay, Midwest में ज़्यादा सेल है December में. So this will show you में complete
details of the particular sale of the particular brand of the particular month. Okay, so this is what my Power BI, a small intro from transform overview and dashboards. So any question regarding this? Hello? हेलो, मेरी आवाज़ आ Yeah, रही है? अरे सर। हाँ, यस। मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है सबका, तो सब अपने आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो माइकल जी से, कोई भी आपको क्वेरी हो तो। ओके डन। I think everybody understood. Any question regarding Power BI? हेलो। Hello, yeah. सर मैं कमलेश बात कर रहा हूँ। Yes, कमलेश बोलो। सर जैसे कि डेटा है, अपने पास डेटा पड़ा है। उस डेटा को अपन ने जैसे उसमें करा, अपने पावर बीआई में लाए। तो पावर बीआई में जब लाएंगे डेटा को, तो उसमें है ना, हाई प्राइस, लो प्राइस और टुडे की हाई प्राइस, इस टाइप का पूरा डेटा है। तो वो किस टाइप से सर उसमें शो करेंगे अपन, बताएंगे? सो मैंने आपको अभी पहले पावर बीआई में, पावर एक्सेल में आपको सॉर्ट करना पड़ेगा डेटा पहले, दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले आपको कॉस्ट मंथ वाइज, डे वाइज सॉर्ट कर कर करना पड़ेगा। वंस यू टेक इन पावर बीआई, it is everything about the options within that particular. If you like for example आपको high and low करने का, there are two options. One is using chart is the best way. I can find the कब लो है कब हाई है, like stock market or something like that, the chart. So in that chart only you have to make excel and x and y axis in such a way. You have to know the primary data and secondary data. Excel में कौन सा ऑप्शन करने का, y में कौन सा है. So that is main part. If I show you here, okay, I'll just show you. ओके ओके। Yeah, दिख रहा है स्क्रीन? Yeah. So ये सर अभी दिख रहा है। yeah, this is a main point where you want to know the data, high and low. So in this case, I can select different types of charts. If I go here, the beauty of the Power BI, I can replace chart with any other options. Like मुझे अभी ये देखने का. If you see here, here I come to know high and low कैसा है. Can see here. So राइट राइट। depend on chart, you will able to see. See, this is a different chart. ये इसमें Power BI में beauty है. Like okay, different types of chart. If you see mostly people use this chart, or this chart is a different type of charts. ओके ओके ओके। राइट। ठीक है सर। And there are a lot of options. I thought you only overview. If you go down, there are different types of option है. Filter कैसे करने का, then cross. It is bigger ocean. I have thought you just 5% of Power BI. The ओके Power BI have, you have to go more depth. Visualization क्या है, present क्या है, or different types of, it's a advanced Power BI. So today I showed you the basic.
How most people must have not seen the Power BI. So today I showed you how the Power BI looks like. कहाँ ओके डेटा से एक्सेल में कैसा प्रेजेंट करने का, ओनली जस्ट अ पार्ट परसेंटेज ऑफ दैट आई शोड यू. ओके. ओके 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 सर, ये जो है पावर बीआई, ये एक्चुअली फ्री है? Yeah, Power BI, there are two. One is advanced Power BI that you have to buy it, that you need license. That is a higher like data analysis, data scientists. उनके लिए अलग रहता है. But for ओके common people who are we people, it's a free है. ओके. ओके मेन ओके पार्ट ओके यू सर। नीड एक्सेल डेटा. ये पावर बीआई आज मैंने आपको दिखाया डाउनलोड कैसे करने का. वो हाँ हाँ पूरा फ्री है. वो आप माइक्रोसॉफ्ट जाके उधर डाउनलोड कर सकते हैं. इफ यू सी ओके, इसमें जाके डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट राइट सर, राइट। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you, Kamlesh, for question. Anybody? Hello, sir. Am I audible? Yeah, audible, Manas. Yeah. Yeah, I've already put in the chat. My question is that, sorry, I joined late. That using Power BI, whatever I have seen from the limited knowledge and interaction with the industry person, that some people are having a dashboard in their mobile itself, where even if they are traveling outside, then they can see the performance of their business just at a glance. So how is the operations performing? How is the sales and marketing team performing, etc., etc. So it's just like a dashboard in their mobile. So, is this possible creating using Power BI, or do we need any type of other tools for that? As I told you, there are a lot of competitors tool in Okay. if compared to Power BI. But there is also Power BI mobile, Power BI mobile. In mobile also you can create the tool. If you create a Okay. tool in Excel in a system, you can use it in Power BI also. Why you also have a tablet? You're going lab, you go to the one of business unit, and you to show the performance of company, something sales and all. You can use Mhm. using the Android mobile also. It is just a PI desktops. In mobile Okay. also, it presents same whatever you can do. You can do it in mobile also. Only you need the Excel data that you need to upload and keep it. Once you in system when you upload and keep it in dashboard like Power BI, you can manipulate data within the Power BI itself. For example, if I imported data from Excel to Power BI, so I'll show you one of the example like which I showed you. So I have a table. The beauty of Power BI is what? It carries data with the Power BI. Although Excel Okay. में एक बार import किया उसके साथ जाएगा वो. Mhm. ऐसा नहीं वो एक्सेल सेपरेट रहेगा और पावर बीआई नहीं. अभी देखा मैंने ये अब सिर्फ मैंने पावर बीआई ओपन किया. अभी मैं एक्सेल क्लोज करता हूँ. ओके, आई क्लोज द एक्सेल एंड आई यूज इन पावर बीआई. सो स्टिल द डेटा अवेलेबल इन पावर बीआई. आपको इस पे जाके मोबाइल में ऑप्शन यूज कर सकते हैं. दिस इज टू शो. Okay. एंड अगर उसको डिटेल आपको यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग एंड उसको एक एक डिटेल चाहिए कॉलम वाइज टेबल, आई हैव टू Mhm. क्लिक ऑन टेबल व्यू और पूरा वो Right. टेबल दिख सकता है उसमें. इट मींस ब्यूटी इज व्हाट पावर बीआई टेक्स द डेटा फ्रॉम एक्सेल एंड इफ यू वांट टू शेयर data BI to anybody, data goes with that. Okay, Mhm. so you can present anywhere, anyhow, in any applications. Okay. And second question is It's that, clear? just yes, sir. It's totally clear. And as I mean, when I will practice, I maybe I'll get more clarity on that. My second question is that, as you said, there are much more tools with the competitors. So nowadays, see, as freelancers, we are working online. So our reliability is more on the Google spreadsheet than the Excel, because it's more viable for us. So, is there any connection or any linking procedure so that we can import the data of the Google spreadsheet to the Power BI for creating such dashboards or like that? Yeah. So if you see how many types of options are there to import the data. So if I go here, there's option home options and here data, get data. If you see here, there are different types of applications. I can use Excel, I can use Power BI, I can use data flow, data version, SQL,
text CSV. So text CSV में गूगल का डेटा है, I can convert to text or CSV and import in Excel and put in Power BI. So it is Okay. compatible to all kind of data sets. It is not only one. So you can see blank query, so web, any web application you can have, you can import data. And let's say it's not given particular Google and all, so you can import from Okay. anywhere. Any Excel file, any spreadsheet, you can convert to CSV, import in this, and it will give you the result. ओके, थैंक यू सर। एंड अगर रियल टाइम में डेटा चेंज होता है, फॉर एग्जांपल सेल्स टीम काम कर रही है, उन्होंने डाला कि आज तो सेल्स आ गई, तो डैशबोर्ड में मान लीजिए मेरे मीटर में ऑन ऑन द स्पॉट रियल टाइम में वो चेंज दिखाएगा अगर गूगल स्प्रेडशीट में अपडेट हो रहा है डेटा बैकएंड में? There are two types of connection. One is real time, you can use, or you can import it one. Real time also keeping data on a system, you can give a link, web link to the people. इसका मतलब क्या है, आपका सिस्टम डेटा है और लिंक बना के दूसरे को दिया, जो आप इधर चेंज कर रहे हैं वो उनको चेंज दिखेगा. One is directly Excel file उनको देने का, they will make a changes, or you can give a web link. Whatever changes you do on system, it will be reflect to them. So there are different types of options are there. That also possible. Like I want to do a teamwork. I have a 10 sales people and you are the manager. And मुझे जो इधर change करने का, I want to show that 10 people को क्या change होता है. So that also I can create a link to the master database or data file and give it to them. So whenever you make changes, they also able to see. One of the beauty of this Power BI is a cloud. It's completely cloud based. It's not on Excel or something. I can operate on cloud. जो आप cloud में change कर रहे हैं, बाकी को भी change दिखेगा. So there is a roles and different options like administrator role, different roles. So main person make changes, other people can see that data. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. You're welcome, Manish. So any question? यस सर। Yeah, Kamlesh. सर एक्चुअली में अगर जैसे एक्सेल पे जो डेटा है वो रोज सिंक्रोनाइज होके और मतलब डेली अपडेट हो जाता है, उसमें फाइल खोलो वो डेली अपडेट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वही डेटा का जो लिंक रहेगी, तो जब अपन इंपोर्ट करेंगे उस पे पावर बीआई पे, तो ये क्या नाम है, लाइव में भी वैसा हो जाएगा पावर हाँ, बीआई में भी? हाँ लाइफ में हो जाएगी, बिकॉज मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, मैंने कॉपी नहीं किया. हाँ अगर मैं एक्सेल में चेंज कर रहा हूँ, इधर भी चेंज कर सकता है, उधर भी चेंज है. इफ आई मेक चेंजेस हियर, आई कैन मेक चेंजेस हियर आल्सो, और आई कैन मेक चेंज एक्सेल. अगर एक्सेल में चेंज किया हाँ उधर, हाँ वो डेटा इधर यू हैव टू रिफ्रेश इट. ओनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो बैक टू हियर और उसको रिफ्रेश करने का. फॉर एग्जांपल मैंने मंथ नेम चेंज किया, इधर जाके रिफ्रेश करने का, रेवेन्यू रिफ्रेश करने का, रिफ्रेश किया तो जो है वो पूरा डेटा इधर दिखेगा. बिकॉज आई हैव जस्ट इंपोर्टेड डेटा, आई हैव नॉट cut paste or copy paste, nothing. Importing means it is the Excel remain the same, the file, उसमें जो complete data change करेगा तो इधर reflect हो जाएगा वो. राइट राइट ठीक है। Hello, sir. I just remembered one more question, that how is it practically applicable for a sales agency जहाँ पे mainly sales based ही 80% होता है, CRM updation वगैरह? Sir, am I audible? Yeah, audible, yes. हाँ, तो अगर मेरी सेल्स रिमोट सेल्स एजेंसी है, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करते हैं बाकी मेरे टीम मेंबर्स, मैं एक जगह से ऑपरेट करता हूँ, मान लीजिए मेरा वेबिनार एक ट्रेनर का होता है, मैं एफिलिएट करता हूँ मेनली बहुत सारे ट्रेनर्स का, उनका वेबिनार का मान लीजिए मेरे पास रिपोर्ट आ गया, वेबिनार का चैट आ गया, नंबर ऑफ अटेंडीज रजिस्ट्रेशन आ गए, एंड देन आई डेजिग्नेटेड द लीड टू माई रिमोट टीममेट, किसी को 10 किसी को 15 ऐसे करके मैंने लीड जनरेट कर दिए, एंड हमारा एक फाइनल गूगल शीट में डेटा अपडेशन होता है कि उनसे कॉल पे क्या बात हुई, वार्म हॉट कोल्ड, सारी चीजें ऐसे वाइफरकेट होती है. तो हाउ इज पावर बीआई टूल हेल्पफुल फॉर द सेल्स एजेंसीज
remote sales agencies like us, how it can help us grow in the business. See, today also example I given sales example only. So if you see 90% of company sales people use the Power BI. So main work जो ज्यादातर पावर बीआई में रहता है फॉर सेल्स पीपल. सो सेल्स पीपल आपको क्या सेल्स में क्या होते हैं रेवेन्यू होता है हाउ मनी सोल्ड हाउ मनी प्राइस कितना होता है डिफरेंट. So this is the best way Power BI you can do it. Now if you want to convert from Google to here, which I explained you before, so you have to update the sheet. If you update the sheet, automatically the chart changes as per that. आपको इधर एक बार आपने डिसाइड किया. If I share you the screen now, so I want to know whether I must answer you correctly or not. You can see the screen. Yeah, yes, yes, I एक can see बार that. आपने एक्सेल एक्सेल अपडेट किया एवरीडे अपडेटिंग, ये पूरा टेबल पूरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग, ओनली यू हैव टू रिफ्रेश इट. Okay. ओके फॉर एग्जांपल ये अभी ये सेल्स रेवेन्यू as per your changes it will be increase or decrease. Like थिंक अबाउट एक्सेल. अब एक्सेल में काम करे Right. गूगल में काम कर रहे एक टेबल है यू मेंटेनिंग टेबल रेस्ट ऑफ योर 1 year फॉर एग्जांपल एंड जैसे सेल है डिलीट करता है ऐड करता है सेम वे. सो यू डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन पावर बीआई. फर्स्ट यू हैव टू प्लान इट हाउ टू प्रेस व्हाट विजुअलाइजेशन यू वांट चार्ट यू वांट पाई. आई कैन पुट अ पाई आल्सो हियर. पाई चार्ट कितना रेवेन्यू हुआ वो भी मैं डाल सकता हूँ. फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक हियर लाइक आई विल शो यू वन थिंग. ओके ज्यादातर रेवेन्यू में पाई चार्ट भी यूज करते हैं वो लोग. ओके दिस पाई चार्ट. सो इफ यू सी हियर इट विल शो यू हाउ मेनी रेवेन्यू फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ए मंथ में कितना रेवेन्यू हुआ देखा. यू कैन सी हियर. सो आई कैन चेंज इट Yes, I can. टू दिस वन. What do you call, yeah, month. Yes, see I can show you. और यूनिट प्राइस में कितना. सो दिस पर्टिकुलर स्टेट्स कितना रेवेन्यू हुआ that also I can add it. Okay, so this is I can do it. I have to just have the Excel data. इसमें input चाहिए Excel data. You can do a lot of change in Excel data. It will reflect automatically in the Power BI. Yeah, thank you, sir. I can relate this point to somewhat like I have tried creating the graph inside the Excel sheet itself or the Google spreadsheet itself. So it kind of resembles that. उससे ज़्यादा I think it's more of the visual elements or more options are there in the Power BI. Am I right? Yeah, yes. The lot of are Okay. there. This is all visualization. If I given, as I told you, I just given you today class 10% or 15% class. There are more things. If I use one, for example, this pie graph, so there are more options. Pie graph में इतना ज्यादातर इतना option रहता है. What is legend? Legend क्या है? Central legend, text क्या है? So if you go to that, is like a ocean. Okay, effect, visualization क्या option है? So all these different types of options. If a month में क्या change है? If you go, it is a lot of options आते हैं. Okay, reports Right. generating and all. Thank you, sir. Under pi only it's like you can make one chapter, one topic. For this you can make one topic, and with the one topic you can present the data revenue wise, unit wise, brand wise. So different wise you can make it. Some people want to know what is the revenue, some people want to know particular area कितना sale हो गया. Total want to know, like your top person want to know total revenue उस साल में कितने महीने में क्या हुआ. But particular region they want to know revenue of that particular region क्या है. So that also I can make. So what I can do, I can use one more slice. For example, region wise आप काम कर रहे हैं. Okay, for example, you are using region wise. So instead of putting brand wise, I can select region wise. I'll delete this map and I can put a slice. Okay, एक slice बना के इधर मैं उसको change करता हूँ. 1 minute, I'll select here. I'll make it state wise. For example, if I change to state wise, it will show all the states. I'll make this view as a tile. Okay, so आपको इस region wise. So क्या है Albana, different type of region. So if I click the region, if you see come it changes to that particular region. Okay, for your, so as per the um,
organization, like top person want to know complete view, but I want to know state wise. So I can make changes in different types of, like instead of brand I can go to region wise. अभी फंटा ए, for example Albania में फंटा कितना सेल हो गया. So this I can make, see it's a in Albania फंटा we have 20,000 revenue हो गया उधर. Okay, which month I can put month also, and I can explain the which उसके month में कितना revenue हुआ, that also I can make. Okay, so you can completely do a presentation such a way as per the region, as per the your requirement, manager requirement, you can make a lot of changes. I hope you answered your question, Manas. I'm not able to hear. Yeah, definitely, sir. Thank you. Thank you very much. Yeah, Am I? yeah, Jayesh have sent one question. Yeah, it's a free, Power BI is a free. Okay, but for data analysis and data scientists, they are using advanced Power BI. For that, will be paid. But people are using a normal like Excel and all in office. For them, Power BI is free because Power BI does not generate any data. It just pull the data from other data source. Excel में, SQL database में, different CSV text में से data ले रहा है वो. Okay, it's a free software. Any question? So by the way, how many people are using Power BI? You have first time you heard of Power BI or you have heard before? Okay, but not maybe not not use. I think most people using Excel. ज़्यादा लोग Excel use करे. Am I right? Yeah, correct. Now spreadsheet का जमाना गया. अभी Power BI. You want to impress somebody or present somebody, just use Power BI. It will not only give you the boost, but मैनेजर को एक एक झटके में पता चलेगा क्या हो रहा है आपका सेल्स में, and will be very happy if you put some such a present such a way, putting some colors or something like that. He will be happy that okay, this person have improved from Excel to Power BI. So next, data analyst is the next top going. People are not going for Excel and all, so you have to move to Power BI. मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो या मेरी आवाज आ रही आ रही सर. है? किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं। Okay, yeah, you can use personal email ID also. Okay, it's not meant for business also. For other use also we can use it. एक chat में है, like one person is asking me, I'll let know. Yeah, Dilip is asking whether I can use my personal email ID. Yes, you can use your personal email ID. ओके, और किसी का क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है? गाइस दे दिया।
Okay then. Okay, Michael ji. Okay, yeah, thank you. Thank Thanks, you. thanks for giving it time. Thank you. Thank you, thanks.